Okay, good evening everyone, and first of all, Eid Mubarak to all of you. I hope you all are doing very good. Well, let me know in the chat box. Am I clearly audible and visible to all of you? Yeah, am I clearly audible and visible? So, what is the age? What is the age eligibility for NSEJS 2023? Guys, one dedicated video will be launched on Vedantu's Olympiad school channel. So, yeah, there you will all these doubts will be taken. So, just wait for it. Nidhi ma'am will make one video regarding the eligibility criteria, and all your doubts will be taken out there. Okay, so yeah, let me know. Am I clearly audible and visible to all of you? And well, how you guys are doing? Like, is it fine? Is it the best thing? Okay, weekends चल रहे हैं बच्चों के, तो weekends पे मजे भी होते हैं, right? तो कैसे चल रहा है तुम्हारा weekend? हाँ, आज NSEJS करोगे और then what is your plan for Sunday? Yeah. So, कितनी पढ़ाई चल रही है, कितना रिलैक्सेशन चल रहा है guys, and like the summers are also going on and the weather is really hot outside. So like one suggestion to all of you, just take care of yourself. बेटा, changing weather है, so you may face some difficulties. Yeah. So do you remember me? Maybe. Yes, beta. How can I forget all my kids? Yeah. So without any further delay, let's start. And today we are going to discuss a very important topic, that is oxygen hemoglobin dissociation curve, which is also known as oxygen dissociation curve, right? So are you all excited to learn a new thing today? जल्दी से बता दो बेटा. Are you all excited to learn new thing today? जल्दी से हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? Quick guys. Okay. हाँ. So वीक में दो सेशन ले लो. हाँ बेटा लेंगे. Don't worry. We'll take it. First, since these are the initial days, so I guess one session per week is quite enough. Okay. So बेटा चलो शुरू करते हैं. And here we are. So हमें पता है बेटा कि हमारे ब्लड में क्या चीज का सबसे मेजर ट्रांसपोर्टेशन है. So that is oxygen, right? Blood carries oxygen along with other nutrients, waste products, etc., etc. And blood carries oxygen from lungs to the heart and from heart to various parts. So you guys are aware of the pulmonary and systemic circulation that happens in our body. So बेटा उसी तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो लंग्स से हार्ट होता है, that is the pulmonary circulation, and from heart to the other parts of the body, that is known as the systemic circulation. So blood के through oxygen का transportation is one of the most important function of the blood. Okay, it is a medium of transport for oxygen and carbon dioxide. So guys, आज हम इस लेक्चर में सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में ही बात करने वाले हैं. सो गाइस देखो, हमारे ब्लड में अबाउट 3%, ओके लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. या तो हमारे ब्लड में अबाउट 3% इज कैरीड, the 3% of the total oxygen, it is carried in a dissolved form. बेटा एक ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है. एंड अगर आपको पता होगा कि जो गैसेस होती हैं दे आर सॉल्युबल इन व्हाट? इन अ फ्लूइड, इन अ लिक्विड, इन वाटर. सो जो ऑक्सीजन है वो 3% हमारे ब्लड में बेटा डिसॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करती है. एंड रेस्ट 97% जो बेटा बचा, दैट इज कैरीड एज in the form of oxyhemoglobin. In what thing? In the form of oxyhemoglobin. ओके, सो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ये चीज ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है. नाउ वी नीड टू लर्न समथिंग अबाउट हेमोग्लोबिन एज वेल, कि हेमोग्लोबिन क्या होता है. सो एनी वन ऑफ यू लाइक हु कैन टेल मी व्हाट इज हेमोग्लोबिन? कोई बच्चा जो है जो बताना चाहेगा व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेलो सर, हेलो बेटा. ओके. या, so any one of you like who would like to tell me what is hemoglobin? Anyone? Okay, बेटा जल्दी से बताओ what is hemoglobin? Or you guys don't know this? Okay, चलो बेटा हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि देखो, as I told you that 3% is carried in a dissolved form in plasma and this 97% is carried as oxyhemoglobin. So oxyhemoglobin कैसे बनेगा बेटा? जब आपका हेमोग्लोबिन जो है it will bind with the oxygen. So हम हेमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. Hemoglobin is a red colored iron containing pigment present in the RBC. So hemoglobin एक red colored
आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो हमारे आरबीसी में होता है, whose primary function is to bind with oxygen and to carry it to the various parts of the human body. Okay, so guys, तुम्हें जैसे नाम में ही दिख रहा होगा, right? I write it as like hemoglobin. So guys, जो hemoglobin है, it has two things, right? It has one heme group and you have a globin group, globin part. ठीक है, इसमें दो वर्ड्स हैं, heme and globin. So guys, जो globin है, it represents the proteinaceous part or it is the protein part of the hemoglobin. ठीक है, ये क्या है बेटा? जो ग्लोबिन है, that is the protein part, that is the protein part of the hemoglobin. Whereas ये जो हेमन होता है, ठीक है, तो जो हेम ग्रुप है, this heme group is a non-proteinaceous part. It is a non-proteinaceous proteinaceous part which is made up of iron. Okay, so ये होता क्या है guys? So please remember this that जो हमारा heme group है, right? So this heme group is iron porphyrin complex. What is it? So it is iron porphyrin complex. Okay, what is happening? Yeah. So iron plus 2 porphyrin complex, and this heme group is the thing that contains the what? That contains the iron. ठीक है, तो आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है आपका हेम ग्रुप. नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर दैट एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में गाइस यू हैव four globin chains. As you can see in the diagram, you have the four globin chains, and you have like each chain will be attached to one heme group. Each chain will be attached to one heme group. Now guys please remember कि एक heme group जो है guys, it can bind with one heme group can bind with one molecule of oxygen. It can bind with one molecule of oxygen. So guys, since you have four heme group, so a single molecule of hemoglobin can bind to four oxygen molecules. This is a direct question that can be asked in NSEJS. Very very important. आपके एक hemoglobin में चार globulin chains होती हैं. Each chain is associated with one heme group. So in total, you have four heme group. Now one heme group can bind with one molecule of oxygen. So four heme groups will bind with four molecules of oxygen. I hope it is clear to all of you. Yeah, very good. Now one very important thing कि सर एक आरबीसी में एक रेड ब्लड सेल में कितना हेमोग्लोबिन होता है? So the answer is very easy. It is somewhere around 280 million hemoglobin molecules are there in one RBC. ठीक है, याद रहेगा 280 million molecules are there in one red blood cell. I hope it is clear to all of you. Now let's move ahead. So guys, ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ बेटा क्या बनाता है? It makes oxyhemoglobin with the release of hydrogen, or that is H plus ions. Please remember this. Okay, oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Guys, binding of oxygen with hemoglobin is a reversible reaction. It is a reversible reaction मतलब कि बेटा suitable conditions में oxygen जो है वो आपके hemoglobin के संग bind कर सकता है, और unfavorable conditions में oxygen जो है वो आपके hemoglobin से separate भी हो सकता है. Now we have done all of this, so we can move ahead. Now, binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen. Very, very important. Guys, जो हमारा, as I said, कि in favorable conditions, oxygen has a great affinity to hemoglobin. तो वो कौन सी conditions है? तो guys, वो condition है high partial pressure of oxygen. Guys, lungs में हम क्या करते हैं? बेटा, when we inhale the air, जब हम ब्रीद इन करते हैं एयर को, तो हमारे लंग्स में बहुत ही हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट होता है. नाउ बेटा उसी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो भी ब्लड लंग्स में पहुंचता है वो बेटा ऑक्सीजनेट हो जाता है. ठीक है, एंड अलोंग विद इट हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. साथ साथ में गाइस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen ions का concentration and temperature are the other factors that also influences this binding. बेटा अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के संग बाइंड करे, so you should have a very high partial pressure of oxygen, point number 1. You should have low partial pressure of carbon dioxide, point number 2. You should have a high pH, that is low concentration of H plus ions, and the fourth is low temperature is favorable for the formation of oxyhemoglobin. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. What I told you, high partial pressure of oxygen, right? Low partial pressure of carbon dioxide, low H plus ion का concentration, and low temperature
favors what? Favors the formation of oxyhemoglobin. ठीक है, you guys can note it down somewhere. Now let's move ahead. So it is given over here. Under high partial pressure in alveoli, oxygen can easily bind with hemoglobin in blood capillaries. However, when oxygenated blood reaches different tissues, the partial pressure of oxygen is lesser in the body tissue and hence oxygen is released from the capillaries. Now this is very very interesting. बेटा हमने कहा कि लंग्स में हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है. हियर यू हैव अ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो बेटा ब्लड जो होती है, द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड. ब्लड बेटा जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे देयर इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट. वहां पे ऑक्सीजन आपकी कंज्यूम हो रही है. सो बिकॉज ऑफ दिस कंजम्पशन there will be low partial pressure of oxygen at the body organs of our body. So because of this low partial pressure of oxygen, बेटा जो हमारी ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन से रिमूव होती है और ऑर्गन्स को वही ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है. ठीक है, तो ये समझो बॉडी ऑर्गन में बेटा आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था. बिकॉज पार्शियल प्रेशर कम है, सो आपकी जो बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ वो बहुत वीक होगी. अब बेटा अगर वीक बाइंडिंग है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तुरंत हेमोग्लोबिन से डिसोसिएट होके हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा. नाउ दैट ऑक्सीजन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द ऑक्सीहेमोग्लोबिन विल बी टेकन अप बाय द ऑर्गन फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट. आई होप इट इज क्लियर एंड इट इज इजी एज वेल. चलो नाउ वी कैन मूव अहेड. सो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है बेटा, एक कर्व है एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ये कर्व में बेटा यू नीड टू नो कि हमने एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं. सो गाइस ऑन द एक्स एक्सिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन एंड वाई पे बेटा हम देखते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ, ओके, परसेंटेज saturation of oxygen, saturation of hemoglobin with oxygen, of hemoglobin, ठीक है, परसेंटेज saturation of hemoglobin. So अ सिग्मोइड कर्व, ये जो शेप आप देख रहे हो ग्राफ का, इसको हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं. सो दिस ग्राफ इज ऑब्टेन्ड एंड दिस कर्व इटसेल्फ इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. नाउ यहाँ पे बेटा आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है कि भले ही देयर इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशन, बट जैसे जैसे आप ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते चले जा रहे हो गाइस, जो परसेंटेज सैचुरेशन आपके हेमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन बाइंड हुआ है वो बेटा बढ़ता चला जा रहा है. सो यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है कि बेटा जब हमारा पार्शियल प्रेशर, ओके लेट मी राइट इट ओवर द नेक्स्ट स्लाइड, या व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 25 mm ऑफ Hg, जब आपका 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है तो गाइस जो आपका हेमोग्लोबिन है, जो आपके पास नेट क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन थी उसका बेटा 55% सैचुरेशन हो जाता है. मतलब कि अगर मैं अपने ब्लड में 25 mm Hg का ऑक्सीजन प्रेशर दूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दूं, सो मेरे ब्लड में जितना भी हेमोग्लोबिन है उसका 50% पार्ट विल गेट सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन. ठीक है, तो इस वैल्यू को बेटा हम P50 कहते हैं. क्या कहते हैं? P50. P50 इज 25 mm ऑफ Hg, 25 mm ऑफ Hg. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गाइस जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका 40 mm Hg के करीब होता है, राइट, सो देन यू हैव 75% सैचुरेशन. आपका 75% सैचुरेशन होता है. गाइस जब आपका पार्शियल प्रेशर 100 mm Hg के अराउंड होता है, सो हियर यू हैव लाइक 95% सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. एंड गाइस इसके बाद जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे सैचुरेशन बढ़ेगा एंड यू विल अटेन अ पीक. बेटा इसके बाद क्या होगी, जो आपकी स्लोप होगी इट विल बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. वंस इट बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द partial pressure of oxygen will have no effect on the percentage saturation of hemoglobin. Why? Because बेटा जैसे आपकी जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब अब कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा लो, जितना हेमोग्लोबिन था सारा का सारा सैचुरेट हो चुका है, 100% सैचुरेशन हैज बीन अचीव्ड. सो अब और हेमोग्लोबिन अवेलेबल ही नहीं है ऑक्सीजन के संग बाइंड करने का, तो हाउ विल इट बाइंड, राइट. तो आपका सैचुरेशन 100% पे आप रुक जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू गाइस कैन आस्क मी. If you have any doubt, you guys can ask me. Okay, so the conditions that I was talking in the very beginning, that is the conditions that are favorable for formation of oxyhemoglobin includes decrease in partial pressure of carbon dioxide,
लो टेम्परेचर एंड हाई पीएच. हाई पीएच मतलब बेटा लो H प्लस कंसेंट्रेशन, लो H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन, राइट. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. तो बेटा इसमें कब होता है, तो जब आप ये कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तो बेटा आपका ये जो कर्व है ना, ये कर्व जो है गाइज, ये आपका कर्व जो है आपका शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट. जब भी आप ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करोगे, सपोज करो बेटा मैंने पहले नॉर्मल कंडीशन में जो था उसमें अपना ग्राफ ड्रॉ किया. नाउ आई हैव चेंज सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. तो मैं देखूंगा कि जो कर्व है बेटा ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा. सो इस शिफ्ट का मतलब है कि नाउ द कंडीशंस आर मोर फेवरेबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन. ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब है लाइक नाउ द कंडीशंस आर मोर फेवरेबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद फॉर द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन टू मेक ऑक्सी हेमोग्लोबिन. सो प्लीज रिमेंबर दिस. शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, इफ द स्लोप इज शिफ्टिंग टू लेफ्ट इट मींस आपका ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो है, आपका एसोसिएशन जो है ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ, दैट विल बी फेवर्ड. बट बेटा आप अगर अब इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो, आप इसका उल्टा कर दो. लाइक इफ यू आर इंक्रीजिंग द partial pressure of carbon dioxide, if you are increasing the temperature and if you are decreasing the pH, matlab if you are increasing the concentration of H plus ions, so what will happen, so guys it will lead to, ठीक है, अगर आप इसे बढ़ा रहे हो तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से होगा बेटा शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट. एंड नाउ दिस शिफ्ट टू राइट डिनोट्स व्हाट, आपकी जो स्लोप होगी वो आपकी बेटा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी. एंड ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मतलब क्या है, डिसोसिएशन. ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी ऑक्सी हेमोग्लोबिन. ठीक है, तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करोगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप H प्लस कंसेंट्रेशन के आयन को बढ़ाओगे, तो बेटा जो हमारी स्लोप है वो हमारी राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना शुरू कर देगी, राइट. जिसका मतलब है कि अब जो है ऑक्सीजन बेटा आपका डिसोसिएट होने लगेगा फ्रॉम दी ऑक्सी हेमोग्लोबिन, so that free oxygen will be made available to the tissue. Is it clear to all of you? जल्दी से बेटा बता दो, because we are done with the oxygen hemoglobin dissociation curve. Now if you have any doubt you can ask me. Okay, when or like a very interesting part, like a very interesting thing कि बेटा जो हमारा 100 ml ब्लड होता है ना, 100 ml ब्लड, उसमें नॉर्मल कंडीशंस में वो सिर्फ हमारे बॉडी ऑर्गन को 5 ml ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. ठीक है, 5 ml ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. एंड जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो सो अबाउट 15 ml ऑक्सीजन बेटा हमारा ब्लड प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी टिश्यूज को. सो प्लीज रिमेंबर दैट एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological conditions, and under extensive exercise like it will be providing about 15 ml of oxygen to the body tissues. Okay, clear sir, very good beta. Okay, so koi doubt nahi hai, so we can take some quizzes, and here's the very first question. Now I have taken this question from NEET ताकि तुम्हारा अभी से ही बेटा जो बच्चे pursue करना चाहते हैं, like they want to become doctor, NSEJS पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटा ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, राइट. सो दैट्स व्हाई थॉट सिंस हमने पढ़ाई है तो क्यों ना एक नीट का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए, साथ में एनएसईजेएस लेवल को ये क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट यू कैन आल्सो गेट टू नो कि विल आई बी एबल टू परफॉर्म बेटर, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कितने बेनिफिट में हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएसईजेएस, राइट. चलो जल्दी से बताओ बेटा. Yeah, so what conditions will be required for formation of oxyhemoglobin at the alveoli? So आपके lungs में alveoli में ऑक्सीजन oxyhemoglobin के formation के लिए कौन सी conditions जो हैं they will help or they will favor the process? A. Okay, I want all the students to answer. Everyone is saying that it should be A. That is high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, less H plus ions, and lower temperature. Let's check it out. And yes, guys, A is correct. So congratulations, you all are capable of clearing NEET because आपने एक बहुत ही difficult level का question आपने अभी just उसे solve किया है. Okay, now let's move ahead to some NSEJS level question. Guys, this is a purely NSEJS level question. So let's solve this one. Okay, so combining of oxygen and hemoglobin within lungs can be promoted by combination, that is the association of oxygen with hemoglobin within the lungs can be promoted by what? Introducing carbon monoxide in blood,
decreasing the O2 concentration in blood, increasing O2 concentration in blood, या फिर increasing CO2 concentration in blood. So tell me, what should be the answer for this one? What should be the answer, guys? Be quick. सोचो और जल्दी से बताओ. Yeah, okay, C. Students are saying it should be C. What about other students? Yeah, जल्दी से बेटा. What do you guys think? It should be A, B, C, or D. Okay, C, C, C. Everyone is saying C, and that is again correct. C is the right answer. When you will increase the O2 concentration, that when you will increase the partial pressure of oxygen, it will favor the process of formation of oxyhemoglobin. That is the association of oxygen with hemoglobin. Now the last question. A sigmoid curve is obtained when? So आप कौन सा ग्राफ ड्रॉ करोगे इनमें से ताकि आपको एक sigmoid curve मिले? पहला, PO2 is plotted against saturation of hemoglobin with oxygen. PO2 is plotted against partial pressure of carbon dioxide. Carbon dioxide concentration in blood is plotted against saturation of hemoglobin with oxygen. Partial pressure of oxygen is plotted against the concentration of H plus ions. So, which one should be the right answer, guys? When you will end up obtaining sigmoid curve. Be quick. Sigmoid curve बेटा कब मिल रहा था मैं? ठीक है. Is the answer A, B, C, or D? When will you get a sigmoid curve? Okay, why? Okay, students are saying it should be C. C, A. C versus A. What should be the answer? C or A? Okay, like most of the students are saying that A should be the right answer. And guys, A is the right answer. But अभी जो हमने ग्राफ पढ़ा था वो यही तो था. That is the partial pressure of oxygen. You were taking it along the x-axis, partial pressure of oxygen, and here was the percentage saturation. Here was on the y-axis you had the percentage saturation. So इसी में बेटा आपके पास एक sigmoid curve इस तरीके से generate होता है. Right? So not these are the answers. Option is the right answer. Very good. Yeah, and thank you very much, guys. We are done with the today's session. Now, if you have any doubt, you can ask me, or we can meet next week, same timing from 5 p.m. to 6 p.m. Next Saturday with another fresh topic. And those students जिन्हें चाहते हैं कि सर ये टॉपिक पहले कवर किया जाए, ये टॉपिक बाद में हम कवर करते हैं. So you guys can drop those things in the comment section of the video. You can also share your post lecture doubts in the comment box. We'll reply back to you. Yeah. So any doubt, anything that you want to ask, guys? Okay. So great. So we can thank you, beta, if you enjoyed the class. Well, let's end it here, guys. We'll meet next week. Bye, everyone. Take care. Good night. Again, Eid Mubarak, and be safe. Enjoy karo. It's your time.